What is giving, why to give, what to give, and how to give. What is giving? Giving is an outreach mindset. As long as we live for ourselves, as long as we are motivated by our selfish concerns, me, my family, my own interest, giving does not come. Giving doesn't take place. मो घर मो पिला मो ये पाठ पढ़े मु केमन भले रही से समय रे ये जो गिविंग साइकोलॉजीटा मनुष्य भीतर न थाए थिले भी ताहा लुचिक दैट इज डॉर्मेंट. सो गिविंग इज an act or a disposition of going beyond oneself and live for the other. Most often we forget that apart from us, there are people who are also equally concerned about themselves. We are not the only, I am not the only man. There are people like me. So when I recognize the other, understand the needs of other, difficulties of other, and try to live for the other, that is called an instance of giving. When I live for the other. So giving is, what is giving? Giving is an other-centric mindset, other, not me only, I am for the other. As long as I think that the others are for me, my family, my wife, my children, my neighbor, my students, my colleagues, everyone is a means to an end. I am the end, and I value somebody provided I have some interest. That is an immoral mindset, non-moral mindset, and there the giving becomes a casualty. Because you think that I am the end and others are the means. But in the act of giving, he is the end, the other is the end, I give. I mean, we more or less everyone is doing it. There are many, many organizations here also, like Bharat Vikas Parishad, many other organizations are there. They also do for the other. They think for the other, they have programs for the other. So these are instances of giving. Why such organisms come to place? Because they want collectively, let us do something for the other. So act of giving or giving as an act or as a psychology takes care of others, concern for others. So other centric. Now the point is, we shouldn't think that giving means only giving money, giving food to the hungry, money to needy. No. You can give knowledge, you can share your expertise, you can give counseling is also kind of giving. And if you do not have anything, you nurse a patient, there is nobody to attend, and you are there to attend in his difficult times, trying times, that is also giving. So giving should not be understood only in terms of giving money or financial resources. Somebody is in trouble and you use your all capacities to salvage him or her out of trouble. That is an act of giving, an ideal act of giving. So giving is not confined to sharing your fortunes, sharing your strength. It's called Khetriyochita Seva. Sharing your wealth is Vaishyochita Seva. Sharing your enlightenment knowledge is Vipuruchita Seva. Utilizing your physical power or services, give physical service, Sudrachita Seva. So in tradition, different sevas have been outlined and each seva is important. Each seva is important. So giving in a very formalistic sense take the form of seva, service. Now what is service? Service is, I am explaining what is given. Service is unilateral. It flows from the giver to the taker. The moment there is an expectation, I give something, what is my return? That becomes commerce. So giving degenerates into a commercial transaction when there is an expectation related to giving. So what is giving, ideal sense of the term? You give for the sake of giving.
You give for the sake of giving. You give, that's it. That is why it is said the real act of giving is forgotten. You don't remember that you gave something because it's not something very extraordinary you are doing. Why? Because you have taken from the society in many, many ways. You are what you are because the society has its input in different ways. The toilers in the field also contribute to the revenue, national revenue, which has made you a doctor. So you have taken all the wealth from the society, from your parents, from the neighborhood, from your friends. Point is, giving is unqualified, unconditional. You give and give. The moment giving is related, suppose I distribute blankets to the people in the slums because ahead there is an election. Somehow you want to woo the voters. That is not giving. That is pure commerce. It is an investment. I do something expecting something in return. Even giving alms to a beggar with the hope that he will bless you. It's also kind of subtle, form of, trade transactional affair. So giving pure and simple is an act of reaching to the other without an expectation. Second is, why to give? Why not to live for myself? The answer is, there are many reasons. Now you giving is not ex gratia. ଆପଣ जो ଦଉଛନ୍ତି ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି. ଆପଣ ଜଣକୁ ଧାର ଆଣିଥିବେ. You have borrowed something, you pay back. Are you doing any, are you obliging him? You have taken something, borrowed something, you are giving in return. It's not something very unusual you are doing, you are supposed to do. If you don't do, you are immoral. You are blameworthy. तो आमे जो दौचे से दबा फल आम भावुचे बड़ कमटे कर ना आम नहींचे तेणु दबा को बाध्य दबाटा मोर उचित. Giving is a moral compulsion. If you do not give, somewhere you have failed in your duty because you have taken from many sources. Unknowingly, you have used the contribution of a toiler in the field to make yourself to become what you are today. So we are obliged to the entire community. So if you do something for the community, all that you are paying by the debt. So giving is not an act of ex gratia. Giving is returning. Giving is paying back the debt to the society. So it is not something which you do over and above your normal duty. It is something you must do. You have to do. It is a moral compulsion. It is a moral compulsion. Do it, not an option. So giving is not an option whether to give or not to give. But must you give? Give you must because you have taken. We should have this mindset when you give. Second, so by giving you pay back the debt. That we should always uppermost. You should not feel that you are great because you are giving. First of all, you are giving because you have the capacity to give, and you have earned this capacity on account of the society. That is why if you give in the society, you are paying back your natural obligation to the society. Now why should giving, next point is, time is very short, next point is जो celebration होची giving October 2 रु बर्तन इंडिया रे होची बर्तन वर्ल्ड वाइड थैंक्सगिविंग यूएस रे हुए से कथाटा इंडिया रे जॉय ऑफ गिविंग वीक दानोत्सव करा होची October 2 रु 10. That is a tenure, that is a normal tenure when you give. But why celebration? Why should we come together and do something? Why should we celebrate? The reason is, first is, anything good need to be celebrated. Anything good should be celebrated. So giving is a good thing, therefore it should be celebrated. Number one. Number two reason is, when we celebrate giving, the goodness in us gets reinforced. आज आसला बेलू ब्रह्मानंद कहते जे जोगरे आनंद ना भोगरे आनंद ईशोपनिषद तेन तेक्तन मोजिथा द रियल एंजॉयमेंट कंसिस्ट इन गिविंग शेयरिंग तेन एंजॉय थ्रू रिनंसिएशन दी प्रकार एंजॉयमेंट अच्छी
enjoyment through acquisition. The more you have, the happier you are. गोटे घर अच्छे आ गोटे घर कटक होगा लक्षे टंका अच्छी 5 लाख टंका फिक्स डिपोजिट होगा किसी लोक अच्छे जिते बढ़ी बढ़ी तो आनंद बढ़ी बढ़ी जीव सब दुखी से माने कारण जिते हेल्ले आउट दरकार नथिंग इज एनफ संसार में सबुठ दुखी हो से लोक जो लोक जिते हेल्ले से आउरी चाहती देयर इज ए क्रेविंग फॉर इट देयर इज ए क्रेविंग फॉर इट So giving is an act of reaching out to the other, and you give because you have that moral duty to give. Now why to give? Because when I give, share, my sharing instinct gets strengthened. ये हाथटा को जत्ते ये करिवे, the more you exercise, the stronger it becomes. The more you exercise your mind becomes more active. देखिए जो सीनियर सिटीजन मैंने जिते चिंता करते जिते ये करते माइंड से एक्टिव रहे खाली बसिक रहे आर्म चेयर पर डल हो बुलीजे डिमेंस आसो डॉक्टर अग्रवाल कहे सो यू शुड गिव व्हाई शुड आई गिव बिकॉज बाय प्रोसेस ऑफ गिविंग माय गिविंग इंस्टिंक्ट गेट्स स्ट्रेंथेन्ड आउ उल्टाटा कौन जान तो आप जिते नेबे से नवा इंस्टिंक्टा बढ़ लोभ आहरी बढ़ तार शेष किसी ना से डिमिनिशिंग यूटिलिटी काम कर आमर इकोनॉमिक्स पढ़ा होता डिमिनिशिंग यूटिलिटी जे 4टा रसगोला खाइबे इफ यू टेक 5 रसगोला देन द यूटिलिटी डिक्रीजेस बट एक्सेप्शन इन केस ऑफ मनी डजंट हैपन द मोर मनी स्टिल मोर मनी तेणु जी नौची वन हु एक्वायर्स तार एक्यूजिटिव इंस्टिंक्ट बढ़ी बढ़ी जाउची शेष पर्यंत से गला बेलू अकाउंट रे एतिक पैसा थी आउ किए सरे तो नथिबो किए तक भोग करे जानी ना है इटा सत्य दिस इज द ट्रूथ व्हिच वी कंफर्टेबली फॉरगेट सो व्हाई शुड आई गिव ना दबा प्रक्रिया रे बहुत दबार मानसिकता आउरी स्ट्रेंथेन्ड होची आ कोन तृतीय रीजन हला जे जेतले हम एटू सेलिब्रेट करूचे व्हेन यू सेलिब्रेट इट अन्य मानक भितर जो दबार मानसिकता दैट गेट्स अराउज्ड गुड आउट कथा मनकर आपणकर एवरीवन हैज अ गिविंग माइंड यू नो दैट एवरीवन हैज द पोटेंशियलिटी ऑफ गिविंग सॉरी माइंडसेट ऑफ गिविंग प्रत्येक मनुष्यर किसी दबारे तार इच्छा अच्छी कि लुचिक अच्छी पाउंस तलर निया भली जस्ट लाइक ए स्प्लिंटर अंडर द आस इट लाइज हिडन प्रत्येक मनुष्य भीतर आप कहे कहीं अच्छी बिकॉज एवरीवन इज डिवाइन एट द कोर प्रत्येक मनुष्य भीतर प्रेम प्रत्येक मनुष्य भल पाइबाटा लुचिक अच्छी से घोड़े हो जाए जो युवा देखला भितर when you see that people give then your giving disposition or mindset gets aroused that would benefit it should be celebrated because in the process of celebration the instinct to give which is dormant latent in others that gets raked up or aroused जेमती गोटे मद खाइबार इच्छाटा केतन मदुआ लोक देले पुणी जाग्रत होइथर खाई दिए सेमती भल जिनसटा को देखिले मनीष भितर सोई रही भल जिनस द डॉर्मेंट गुडनेस अराउज्ड एवं एवरीवन वांट्स टू गिव would love to have that joy of giving because everyone is good at the core एपरिक द मोस्ट डिजनेस्ट मैन पृथ्वीर सबुठ असाधु लोक जो गोटे साधु लोक को देखे तापर तार एप्रिसिएशन थाए अरे केते भल लोक मु व्हाई बिकॉज डीप विदिन ही नोज दैट डिजनेस्ट इज बैड तेणु प्रत्येक एवरीवन हैज दैट टेंडेंसी टू गिव व्हिच गेट्स अराउज्ड gets strengthened becomes explicit the implicit becomes explicit when it is celebrated socially so collective celebration is necessary because when people know that yes people give even a poor man gives अपन देखिए पूरी रे देखिए वीडियो रे अच्छी इवन जो माने कोष्ठ रोगी माने जो लेप्रोस पेशेंट जो माने स्कैवेंजर्स माने से माने किछि किछि देई दोचुंती गोटे चैलेंज से माने किछि ना हमर एटा थाउ अपन जेते देखिबे कोन मु तो किछि देई परिबे so that is first of all you benefit because the goodness in you gets aroused अपन जदि समस्त छड़ेबे छड़ेया मानसिकता बढ़ियो that is why you should cultivate that which makes you richer I am answering why should we should give first of all because we are paying back the debt to the society we should give because the giver is the first beneficiary of service आपण महिला लुगाटा धोई देवे हाथ में देखिए आप लुगा तो सफा हो जाए हाथ भी सफा हो जाए आप हाथ सफा करने काचु ना
लुगार मैला सफा कर काचुंट से मैला सफा करा भितर हाथर मैला भी चली जाइए तेणु अन्य को दबा भितर यू ऑल्सो गेट प्यूरिफाइड सो यू आर द फर्स्ट बेनिफिशियरी द सर्विटर इज द फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस सेकंड if service is celebrated then this psychology of serving giving is aroused in others तृतीय प्रश्न हला हाउ टू गिव दबा उचित प्रत्येक लोक दबा उचित आम देले आउ जन भीतर दबार मानसिकता आसो केमितिका दबा कौ दबाटा दबा व्हाट इज इट केते समय दबा ना रे आम गोटे प्रपोज निजक ठकी था समटाइम मोस्टली वी डिसीव आवरसेल्फ इन द एक्ट मु एते गोटा करदेली मु जगन्नाथ मंदिर को लक्ष टका 10 लाख टका देदेले फंड पेपर बाहर कौन पे देले इनकम टैक्स कटियो एतिक देदेले एतिकटा बेनिफिट पाइबे सो देयर इज ए साइकोलॉजी ऑफ गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ द डोनेशन आई गिव एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई सी व्हेदर माय नेम हैज कम और नॉट सो द पॉइंट इज if you want, if somebody want, what is how to give, first of all ask yourself, are you giving so that when you give a photograph is taken and you take the credit you boost your image, why are you giving केमिति दब जदि दबा पछरे एई प्रकार दबा पछरे केवल जदि unless that means how to give then the giving has to be tempered by, prompted by, motivated by, inspired by love for the other. जदि आपण जहाँ को सेवा करुँच सेवा छाड़ी दिंतु दैट इज ए हैकनी टर्म व्हेन यू गिव समथिंग टू द अदर यू गिव बिकॉज यू लव टू गिव बिकॉज यू वांट टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द चिल्ड्रन अनेक लोग चिल्ड्रन आसती सर देले आम माइलेज कौन मिल किसी पिला आसती कह सर मो ना कौट रखे और सब लिखि दूसरी डोनेटेड बाय सर ना आम प्रैक्टिस गोटे यंग पिला आसिले कहले सर मु 20टा बेंच देवी सर गोटे कंडीशन बोले कौन सर मो ना कौट लिखे नमस्कार कले आई डू नॉट वांट टू बी नेम्ड दैट इज व्हाई इट इज सेड रियल गिविंग शुड बी फॉरगॉटन द लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो व्हाट राइट हैंड गेव केते दूर हम करि परबा दिस इज द मॉडल ऑफ गिविंग आपण बारंबार मन से लोक को पिला दिन सहायता करथिले से पिला पीओ हो गलानी तार दरमा पे आप 200 टका देते आज से पीओ हो जाइए आप 5 जन कहते से दरमा दे देले से पिला आज पीओ हो यू हैव रिमेंबर्ड इट बिकॉज यू वैल्यू इट यू हैव डन समथिंग व्हाट समथिंग अदर देन व्हाट यू शुड हैव डन द फर्स्ट इज द ट्रू गिविंग इज दैट व्हिच इज टेम्पर्ड बाय रियल लव लव कौन विवेकानंद सेज ट्रू लव एवर गिव्स नेवर सिक्स हम आलोचना करते केवल दिए तार विनिमय कि मार स्नेह मॉडल मदर लव्स द चाइल्ड नर्चर्स दैट प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न बड़ हेल्ले चाकरी कि दब दबापी दौर सी दैट इज व्हाई इट इज सेड गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर देयरफॉर ही मेड मदर्स सो ट्रू गिविंग इज शुड बी टेम्पर्ड बाय लव लव लीडिंग टू एम्पैथी एम्पैथी माने सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन से मो पिला नुहे सी हूँ मो भीतर बाहर ही इज मी सी इज मी ये एक्सटेंशन ऑफ माय बीइंग जिते एम्पैथी माने तार भोकटा को आप अनुभव कर हाथ आपन भोक हो पुण आपण हाथ से रुटी दीटा खसी पड़ू ना सी आगे नौ ना तो गले आधी घंटा पर कौटी खाइबी तब किए दब न दब that means to feel the feeling of the others be in somebody else's shoes and address the need so how to give giving for the sake of giving no expectation in return giving should be tempered by love and empathy for the other ebang at the end I should say what is giving why to give and how to give last what to give कौन देवी बट मु तो निस्व तुम निस्व तो निस्व भार अनुभूति अच्छी कि नहीं अच्छी बहुत गोटे थी ओजनिया अनुभव करने किसी न थी निस्वतार जो आनंद ताको कहून लोक मान आगे तुमको यू आर ग्लोरीफाइंग पॉवर्टी निस्व हबार सबकि हरइबार अन्य गोटे आनंद थाए
नहरला पर से आनंद आप जापर ना जो भाव में आप दी दिन भोकर न रही गोटे भोकिला लोकर असुविधाटा आप जापर ना किसी ना योर जीवन अनुभूति सेयार करेंगे वी आर बिल्डिंग अप ए ओल्ड एज होम अलॉन्ग विथ ए चिल्ड्रन होम with the view that the old people will share the lifetime experience with the children and children will lend them the feeling of grandchildren. Mutually supportive. It is mutuality. And by giving, you do not lose. By giving, you get. What do you get? You get that which everyone wants. But पिंपुटे मरिया को चाहे नहीं, सी भी भल रहा चाहे कौ लोग जो मद पी सी कुछ भल रही कि जो मनीषर जो आनंदर ये एवरी मैन इज इन क्वेस्ट ऑफ ब्लिस नॉट प्लेजर प्लेजर इज दैट व्हिच कम्स एंड गोज बट ब्लिस इज दैट व्हिच स्टेज विथ यू ये जो आनंदटा ये आनंदर इट डज नॉट डिमिनिश सो दैट इज अ रियल जॉय ऑफ गिविंग एंड वी फील एंड ईशोपनिषद कह जे आ गोटे रिजन दिखाई व्हाई शुड यू गिव ईशावास्यम इदम सर्वम दैट मीन्स द होल यूनिवर्स इज परवेडेड बाय द गोटे आटम टू गोटे एंट टू गोटे एलिफेंट गोटे आटम टू गोटे गैलेक्सी सब भितर ईश्वर अच्छा तेणु आम जिते बड़े अन्य करवा ता भितर जी अच्छा मो भितर सी अच्छा मुझे निजपाई करुचे दि रियल बेनिफिट अक्रूज टू द गिवर दैट इज व्हाई वी शुड गिव एंड यू शुड कल्टिवेट द आर्ट ऑफ गिविंग एंड वी शुड रिमेंबर दैट समस्त भितर से अच्छी अल्पे बहुत समस्त भितर अच्छी जमती मनीष बहुत दिन जर पड़े क्षीरटा पिता लगे क्षीर तार स्वाभाविकता आम पाए ना से भाई नाना प्रकार इट इज क्लाउडेड बाय मटेरियलिटी जमती गोटे जस्ट एज ए मिरर कैनॉट रिफ्लेक्ट इफ देयर इज अ डिपोजिट ऑफ फिल्थ ऑन इट ए मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट आयरन इफ दे रस्टेड गोटे मैग्नेट तो रस्ट लगी जाए तेणु तो नेचुरल पावर से हर तो आम भर जो नेचुरल डिस्पोजिशन ऑफ गिविंग अच्छी से समहाउ सर्कमस्टांसेस परिवेश रे आम एजुकेशन आम परिवेश आम पेरेंटिंग आम स्कूलिंग आम सोशलाइजेशन भितर सेटा मरी जाइए आम भावुचे ना आम भितर से अच्छी सो लेट अस अराउज इट लेट अस ट्राई टू मेक सम डिफरेंस टू द अदर आम पृथ्वी सब करें कि व्हाट एवर लिटिल वी कैन वी मस्ट नमस्कार।